Okay, so hi everyone. Today we are going to learn about or discuss about electrical properties. Okay, so there are many electrical properties which are based on the semiconductors that are insulators and a good conductor of heat and electricity. Okay, so basically there are three types of materials which are classified on the basis of electrical properties. First is conductor. Conductor means a substance which conducts heat and electricity very readily and without a loss of very huge amount of heat. Okay. Then second type is a semiconductor. Semiconductor is substance which passes the electric current, but not such a huge amount at a conductor, but not such a low amount as a non-conductor of heat and electricity. Okay, and the third type is semiconductor. Semiconductor is in a center of conductor and non-conductor. Now, the conductivity of the semiconductor will lie always between the conductor and non-conductor of heat and electricity. Now, we will learn today how this electrical conduction process is happening and how this electricity is passed from one end of an iron bar to the another end of an iron bar readily. Okay, so here in a book, what we have given is a solid exhibits an amazing range of electrical conductivities extending over a 27 orders ranging from 10 raised to minus 20 to 10 raised to 7 per ohm meter. Now, here the conductors, semiconductors, and non-conductors are ranging from 10 raised to minus 20 ohm to 10 raised to 7 per ohm meter. Okay, so solid can be classified into the three types on the basis of conductivities. Means at some range when the conductivity is very low, which is 10 raised to minus 20 to 10 raised to minus 10, the substance is called as a non-conductor of heat and electricity, because 10 raised to minus 20 is negligible, means 0.0019 zeros and then 1. So it is very small quantity. So we cannot test as a conductor. So the conductor is having a huge conductivity and very low resistivity. Always remember that conductivity is inversely proportional to resistivity. Okay, so conductivity is 10 raised to 10, then resistivity will become 10 raised to minus 10 respectively. Okay, so conductor, the solid which conductivities ranging from 10 raised to 4 to 10 raised to 7 per ohm meter are called as conductor. Means 10 raised to 4 means 10,000 to 1 crore per ohm meter. If the conductivity is high, then it is called as a conductor. Now, metals having the conductivity in the order of 10 raised to 7 per ohm meter are good conductors. So all the good conductors of heat and electricity have a conductivity ranging from 10 raised to 6 to 10 raised to 7th power. Okay, so always remember this thing. Now, when we are moving on to the insulators, insulators are the substance which the solid is having of low conductivity ranging from 10 raised to minus 20 to 10 raised to minus 10. So it is very less conductivity. So if it is very less conductivity, then we can tell as an insulators, and the middle part is a semiconductor. So these are the solids with conductivity in the intermediate range from 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4. So the range for a semiconductor, we can say it as it is 10 raised to 6 to 10 raised to 4 per ohm meter. Okay, so you have to remember this thing. Now, when we are moving ahead, so the topic is now conduction of electricity in metal. Now, anybody knows that why the conduction in a metal is actually happening? Okay, so you are knowingly, but not telling, not trying, or not knowing that this is a phenomenon. Okay, so conduction in a metal is due to a free valence electrons. Means जहां पर भी metals
के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस ऑर्बिट होंगे, that is main cause of metallic conductivity. Okay, so the conductivity of the material is depend on the valence electron. Okay, valence electrons जितने ज्यादा उतना conductivity ज्यादा. Means if I am talking about the iron, so iron is atomic number is equal to 26. Therefore, it is having a huge amount of valence electron, so we can say it as it is a good conductor. Okay, so many things means carbon is having a 4 electrons in an outermost orbit, so he will donate also but he will gain also. So most of the time carbon is not a non-conductor of hidden electricity, but if the supply is very greater, it behaves as a conductor, we can say it. Okay, so the conductor may conduct electricity through the movement of an electron or ions. So electron का movement होगा तभी तो electric current generate होगा, because we are knowing that formula for current is total amount of charge per unit time. So charge मेरा 1 coulomb 1 second में pass हो रहा है, then it is known as 1 ampere. When 1 coulomb of charge passes through 1 second in a conductor or a semiconductor, it is called as 1 ampere current. So metallic conductors belong to the former category and electrolytes to the latter. Now metals conduct electricity in solid as well in molten state. So iron solid may be good conductor of electricity है, and iron is good conductor in molten state also. Okay, so you have to remember this means metal is universal conductor of electricity. So the conductivity of metal depends upon the number of free electrons available per atom. So the atomic orbital of metal atom form a molecular orbital which are so close in an energy to each other as to form a band. Means अब कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें एक होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड. ओके, so you will be later knowing in this video only that what is the use of conduction band, why it is necessary, why is the energy band gap should low. So all you will be knowing in this chapter. Okay, so if this band is partial field or it overlap with the higher energy unoccupied conduction band, then electron can flow easily under a applied electric field and metal shows the conductivity. Okay, so basically क्या होता है कि एक हिल है, हिल बहुत छोटा है but it is having a very small gap. So if I have to cross that hill तो मैं easily jump कर दूंगा if space is very small. Means 1 meter का distance है दो path के बीच में, तो we can easily jump. But उससे थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब 10 मीटर का डिफरेंस होता है. सो 10 meters एज अ ह्यूमन वी कैन नॉट इजीली, मैं कर सकते हैं 10 meters ओलंपिक में जो एथलीट्स होते हैं वो कर सकते हैं, बट एज अ ह्यूमन वी ऑल कैन नॉट डू दैट. सो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है. बट अब 100 मीटर मैं बीच में गैप कर दूं, एक रोड इस साइड है, एक रोड दूसरे साइड 100 मीटर दूर है, उतना तो कोई भी नहीं कर पाएगा. सिमिलर वे में जो कंडक्टर होता है उनके बीच में 1 मीटर गैप आप कैलकुलेट कर, मतलब फॉर एन एग्जांपल आप 1 मीटर लेते हो तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंडक्शन में से वैलेंस में इजीली चला जाएगा. बट उसके जगह पर 10 मीटर है तो इधर 10 एथलीट्स खड़े हैं, तो क्या होगा, तो कि एक का 2 एथलीट्स जाएंगे और बाकी रह जाएंगे. पर अब 100 मीटर होगा तो 10 एथलीट में से एक भी नहीं कर पाएगा. क्यों? बिकॉज 100 मीटर गैप कोई नहीं जंप कर सकता. सो दिस इज अ फिनोमिनन व्हाई अ कंडक्टर कैन ऑल द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. जब सेमीकंडक्टर में से हाफ या 70% इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, एंड इफ इट इज अ इंसुलेटर ओनली 10 to 20% ही जंप कर पाएंगे. ओके, सो इफ द गैप इज फिल्ड valence band and the next higher unoccupied band conduction band, मतलब जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे.
And if there is some process, some heat, and that valence electron, if moves to the upper band, which is known as a conduction band, so उसको हम electric conductivity बोल सकते हैं. So electron cannot jump to it, and such a substance has very small conductivity and behaves as insulator. मतलब if gap बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा. सो ऐसे सब्सटेंस का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है एंड दे आर अ वेरी वेरी गुड इंसुलेटर्स. अब ऐसा बोलोगे कि इंसुलेटर्स तो हर बार हमको काम खराब करते हैं, तो व्हाई वी आर हैविंग अ इंसुलेटर्स? सो ऐसा नहीं होता है. इंसुलेटर्स भी इतना रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स. जब आपका जो हेयर ड्रायर होता है, तो हेयर ड्रायर में ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ता है जो हीट लॉस करा सके, मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो. तो अपने हेयर ड्रायर जब भी खोला होगा ना, तो उसमें एक टंगस्टन वायर होता है. तो टंगस्टन वायर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन वायर इज वेरी वेरी ह्यूज. ओके, सो वो क्या होगा कि वहां जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो वो इलेक्ट्रिक हीट जनरेट करेगा, एंड उसमें पीछे ब्लोअर होता है, तो हीट जनरेट हुआ एंड ब्लोअर से एयर आएगा, तो क्या होगा? तो कि इट विल थ्रोइंग अ हॉट एयर एंड वी विल यूज दैट हॉट एयर टू ड्राई आवर hairs. Okay, so this is basic examples. Now conduction of electricity in semiconductors. Okay, so in the case of semiconductor, the gap between the valence band and the conduction band is small. Therefore, some electron may jump to the conduction band and show some conductivity. मतलब सेमीकंडक्टर के बीच में जो कंडक्शन एनर्जी बैंड गैप होता है वो उतना बड़ा भी नहीं होता एज कंपेयर टू इंसुलेटर, उतना छोटा भी नहीं होता है एज कंपेयर टू कंडक्टर. उसका मतलब क्या? कि वो कंडक्टर से कम इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा बट इंसुलेटर से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा. So electrical conductivity of semiconductor increases with a rise in temperature. हमेशा याद रखना कि resistivity of substance हमेशा क्या होता है? क्योंकि resistance or the resistivity of substance increases with temperature. But this is exception in a semiconductor that the resistivity of their increases with increase in temperature. We can say, ठीक है? तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है सभी चीज में, बट सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है. as we are increasing temperature, conductivity of the semiconductor also increases. ठीक है? So since more electron can jump to the conduction band, substances like silicon and germanium shows this type of behavior and called as intrinsic semiconductor. मतलब ऐसे semiconductors and important semiconductors are germanium and silicon. तो ऐसे semiconductors जिसमें अच्छा थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, so the conductivity of this intrinsic semiconductor is too low to be a practical use. Their conductivity is increased by adding the appropriate amount of suitable impurities. मतलब conductivity होता है but उतना भी नहीं होता है कि if we are using in a practical life तो मेरे को वो काम लगेगा. उससे अच्छा मैं क्या करूंगा? I will be adding some amount of metal or some amount of impurity to increase the conductivity. मतलब मैं ज्यादा प्रोटॉन्स डाल दूं, पॉजिटिव चार्ज बना दूं तो भी अच्छा है, नेगेटिव चार्ज बना दूं तो भी अच्छा है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है एंड नेगेटिव चार्ज भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है. ठीक है? So now here diagram is very important and we have to just interpret what they have been telling. So इसमें हमको बोला है कि मेटल्स, तो मेटल्स में आप जो ब्लू कलर का लाइनिंग दिख रहा है ना आपको, ब्लू कलर का बॉक्स, इट इज कॉल्ड एज अ वैलेंस बैंड, एंड जो व्हाइट कलर का बॉक्स है उसको बोलेंगे हम लोग कंडक्शन बैंड. सो अब देखो पहला जो ए फिगर है ना वो क्या है? तो इट इज अ मेटल. ना मेटल में जितना कम, पर बल्कि मेटल में इतना कम होता है कि वी डोंट हैव टू इवन शो,
बिकॉज इट इज इन अ माइक्रोमीटर। अब इतना कम होगा तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी पड़ेगा। अब मेरे को 1 माइक्रोमीटर जंप करना होगा तो मेरे को डिफिकल्टी नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई द valence band and conduction band of the metals are very combined. Therefore, the electron can easily go from one place to another or a valence band to conduction band. बल्कि अब बी फिगर में इंसुलेटर दिया है। अब इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है उसके बीच में वेरी ह्यूज गैप है। उसका मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में पड़े हैं तो उसमें से एक ही वो कर पाएगा, बाकी 9 वैलेंस बैंड में ही रह जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, मतलब कि कंडक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं हो रही है। therefore we can say that it is a non conductor or an insulator of heat and electricity. Okay, अब जो गैप होता है ना बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इट इज नोन एज अ फॉरबिडन जोन और एनर्जी बैंड गैप। मतलब उसको फॉरबिडन जोन भी बोल सकते हैं और एनर्जी बैंड गैप भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड इज सेमीकंडक्टर। उसमें हम इजीली देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप नहीं है, ऐसा भी नहीं, ज्यादा है ऐसा भी नहीं है, इट इज मीडियम, इट इज बिटवीन द कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। सो उसमें 10 में से 6-7 इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे, बट जो 4 बच जाएंगे तो ऐसे टाइप को सब्सटेंस को हम लोग सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। सो वी कैन से दैट एनर्जी बैंड गैप फॉर अ इंसुलेटर इज ग्रेटेस्ट देन energy band gap of semiconductor, and it is least in the conductors, we can say it up. Okay, so if you have any doubts regarding this topic, then you can tell me in the comment box. ठीक है?